Hello everyone. Today we have Vedika Vasandani here who has scored 107 in the MHCET 5 years law entrance exam. She is our Dombivli branch offline student. So Vedika, आपको कैसा लग रहा है ये स्कोर जो है आपने इतनी मेहनत से अचीव किया है वो देखने के बाद? मैम बहुत खुशी हुई। मुझे इतना यकीन नहीं था कि मैं 107 लाऊंगी एंड काफी अच्छा रहा वो देख के एंड इट वाज इंडीड अ चेरिशेबल मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। ओके, सो फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था आपका ये स्कोर जानने के बाद? दे वर रियली अमेज्ड एंड दे वर लिटरली प्राउड ऑफ मी। मतलब लिटरली उन्होंने बोला कि इतना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था एंड एज मी बीइंग द फर्स्ट जनरेशन जो एज लॉ करने वाली है परस्यू, तो दे वर रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी। ओके, वेदिका, अब ये कौन सी कॉलेज में आप जाने का प्लान कर रहे हो विद दिस गुड स्कोर? Ma'am, as usual, GLC. I'm aiming at GLC. If not GLC, Praveen Gandhi, Mumbai. Mein. Okay, fine. So I think you have high chances of getting into this college. So very good. You have achieved your dream, that getting into your dream college. You are very almost close to that part. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Okay. So Vedika, can you share your strategy, what you had followed for studying? Yes, ma'am. So basically, we have 5 subjects. उसमें logical reasoning, legal, maths, English. तो बेसिकली मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस किया, दैट वाज लीगल। ऑब्वियसली एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर है लीगल सब्जेक्ट के लिए, तो लीगल। एंड देन डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मैंने किए, जो ऑब्वियसली बीएडी केयर की तरफ से ही आते थे, तो आई वॉच दोज वीडियोस। देन फॉर लॉजिकल रीजनिंग, यस, मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया। एंड इंग्लिश तो बेसिक बेसिक ग्रामर में अच्छे से करके गई थी, विच वाज टॉट बाय अस बाय द प्रोफेसर्स, तो उस पे मेन फोकस किया। एंड जो वीक पॉइंट्स है उनको लास्ट में किया, बट ऐसा नहीं कि मैंने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा, सब सब्जेक्ट्स कवर किए एंड ट्राई किया कि अपना बेस्ट दे सकूं। एंड एट द एंड मॉक टेस्ट भी मैंने दिए काफी, 7 to 8 मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए। लाइक यू गेट अ बेसिक आइडिया आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट की वेयर यू स्टैंड एक्चुअली, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। Okay. Okay. So mock test basically helped you to achieve a good score. So mock test का आपका source क्या रहा था? Yeah, obviously my BEduCARE classes. Ma'am, if you don't mind, I would like to share an experience with BEduCARE class. Yeah, please tell. Yeah, so actually what happened is one day prior to the exam, I was feeling very low, and because my weak point is max, so I was really worried, and I've texted and called ma'am and sir of Dombivli branch and asked them to keep one hour session with a max professor, like just one day prior. And they said, yeah, we'll try to arrange, and they literally arranged. मतलब मैं एग्जाम के एक दिन पहले गई हूँ एंड मैथ्स के जितने भी मुझे डाउट्स थे वो सब सर ने सॉल्व किए। एक दिन पहले जब सब कुछ ऐसे रहता है कि नाउ यू और ओनियो, दिन भी बीएडी के क्लासेस ने काफी मदद किया एंड सर से जो मोटिवेशन मिला, आई वाज देन फुली प्रिपेयर्ड कि नहीं, डरना नहीं है एंड अच्छे से पेपर लिख के आना है। सर इतना अच्छे से सिखाया और उन्होंने अपना टाइम दिया, सो दैट वाज रियली ग्रेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वेदिका, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या करना है अब टॉप लॉ कॉलेज में एंट्री होने के बाद? व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान नाउ? Once I get into the law college, then obviously I'm hoping to become a very good advocate like after 5 years. But then उस 5 years के दौरान जितने भी इंटर्नशिप्स या कॉम्पिटिशन्स आएंगे उन सब में पार्ट लेने का करूंगी। एंड मेरा ड्रीम करियर रहा है लॉ, तो मैं उसको अच्छे से अचीव करके अपने पेरेंट्स का नाम प्राउड करना चाहूंगी। Okay, great, great. So all the very best, Vedika. And would you like to share any tips with the future law aspirants? Yes, ma'am. Thank you. Yes, I would like to share some tips that एग्जाम काफी इजी रहता है, तो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर 100%। इट्स बीन 1 year I've joined BEduCARE classes and इतना प्रॉपर कंटेंट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी कम नहीं, एग्जैक्ट चीजें वो सिखाते हैं एंड उसी को प्रैक्टिस करके एट द एंड अपना हार्ड वर्क दे के फुल बहुत अच्छे से एग्जाम जाता है। सो देर इज नो नीड टू वरी एंड I'm sure if you have a soft corner for legal or law, you'll be able to do it.
Yeah, correct. So thank you, Vedika, for your tips to the future law aspirants. I'm sure that definitely they are very useful for them. So thank you, Vedika, and all the very best from the EduCARE family. Thank you so much, ma'am. Thank you. You're welcome.